हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑन बियॉन्ड द रैंक्स। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, विक्रम मित्रा सर। सो सर उड़ीसा से हैं, तो मैं सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। सो सर सर अभी राइट नाउ ही इज इनटू द कैनबिस इंडस्ट्री। तो जब भी हम कैनबिस का नाम सुनते हैं या फिर एक कोई भी लेमैन में हु इज नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक वर्ल्ड, अगर वो कैनबिस का नाम सुनता है तो वो दिमाग में ट्यूबलाइट जल जाती है या फिर दिमाग का बल्ब जल जाता है और वो उसे नेगेटिव वे में या फिर कुछ अनएथिकल वे में ही उसे परसीव करते हैं। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो हम वही मिथ ब्रेकिंग रहने वाला है, वो मिसकंसेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। हम कैनबिस के पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू कैसे है, क्या साइंटिफिक वैलिडेशन है, क्या कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह भी हो रहे हैं। आयुर्वेदा से रिलेटेड भी हम सर से इंसाइट्स जानेंगे, सर की पूरी जर्नी समझेंगे। सो thank you so much sir for accepting our request and coming on our channel Beyond the Ranks. So good to have you on our podcast. Thanks, Laveen. Thank you so much for having me here. It's actually been a pleasure. Start our interaction by it would be better if you could tell our audience about your journey, about your academic background, about your professional journey, and about your career path, starting from the initial days and the initial steps to your current role. Thanks, Laveen. So basically, I am a ex-hospitality professional. I got trained in hospitality at the Blue Mountains Hotel School in Australia, which is one of the best, hotel school in Oceania. And it's my background comes from there. I'm a thoroughbred hospitality person, trained under a German boss. And I spent quite a few of my years training there and also working there. And my current role, where I actually am, working with medical cannabis, and when I started the first cannabis company in India, the inspiration actually came from Australia, from where I did my studies, and it was actually. Uh, that was the country where I actually came to know that cannabis has got so much of other use apart from recreational use. वहाँ पे हमें ये पता चला कि इससे इसी पौधे से इसके जो कपड़े बनते हैं, इसी पौधे से मेडिसिन्स बनती है, इसी पौधे से घर बन सकते हैं, इसी पौधे से प्लास्टिक्स बन सकती है. I mean, like it was like a plethora of new information that I came to know when I was there in Australia. And inspiration wahi se aayi thi, but the main and the place where I'm from, which is like Odisha, it has a very old cultural relationship with cannabis because it's a part of the Shaivite culture here यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने बहुत बचपन में हम देखते थे कि जितने जो आपके जो सीनियर लोग हैं, लाइक जितने सारे जो दादाजी इसी एज के जो लोग हैं, शाम के समय वो जाते हैं मंदिर के पास और वो हम लोग देखते थे कि they would eat छेना, which is like the previous stage of paneer. They would have that and उसके साथ वो एक शरबत पीते थे. So वो जो शरबत थी, we later on as we grew up we came to know that it was bhang, and the reason they used to take it is because it has a lot of पाचक शक्ति. हर एज में बढ़ने के बाद पाचक शक्ति कम हो जाती है. So we knew that in Odisha something like this happens, but that cannabis plant can have so many uses and so many things. That was a completely eye opener for me. और हम तो ऐसे दोस्तों के साथ घूमने गए थे. Like एक party थी जो we heard like it is a Mardi Gras party, and there is a place called Nimdin जहाँ पे like cannabis is kind of legalized, and we were like, okay, let's go check it out. So the entire journey started from there, and the most eye-opening part was कि वहाँ पे एक औरत थी जो अपने 7 साल के बच्चे के साथ आई थी वहाँ पे, and she was giving a speech. And what she was saying was that cannabis gave her child another breath of fresh life. ये बच्चा जो आपके सामने खेल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, there was a time when he used to get 60 to 70 seizures in a day. Today he is seizure free because of cannabis. And that kind of blew my mind, कि अरे यार, this is beautiful. Uh, and that is how I got the inspiration, from like, okay, this is just crazy, this so many things could be done. And personally, I also had a issue where what happened is I had COPD.
a lot of, I had chronic obstructive pulmonary disorder, और इसमें क्या होता है, आपको सांस लेने में wheezing होती रहती है. यस सर. I used to have it like 21 years of my age. I used to be sick. I used to be wheezing. आप मेरे सामने अगर आप बैठते तब तो आप सुन पाते मेरे को कि मैं फू फू ऐसे साउंड हो रही है. And I used to carry Asthalin inhalers all the time with me क्योंकि कभी अटैक आ जाए asthma की, और मैं ट्रैकिंग नहीं कर पाता था. I was obese. I was overweight. And what happened is ऑस्ट्रेलिया में ही मेरे एक दोस्त थे. His like Sukhi, and what he had got done was like he had got enrolled in a medical cannabis program in Switzerland and Australia. Maybe वो somehow at that time एक study चल रही थी, so they were doing a study on vaporized cannabis extract for asthmatic condition, and it was like a small clinical study. तो उससे क्या होता है, पैसे मिलते हैं जो enroll होते हैं. So he had got enrolled for it, and he actually got a benefit from it. And he said, कि, you know what, why don't you also get enrolled and see how it is? Because मेरे को भी बहुत benefit हुआ है. And you won't believe this, Laveen. And I mean, I was able to sleep in 21 years for the first time without wheezing. My nose was open. Otherwise, my left nose would always be closed and मैं सांस नहीं ले पाता था. This was the personal, this was a personal journey with cannabis that actually kind of changed my complete understanding about it. I'm like, wow. हमें जो घर में या फिर अपने ही देश में जो बोला गया है वो कुछ एक है, लेकिन like but I got a medic benefit out of it, and it was just astonishing. But what was more even that kept going on in my mind कि हम इसे prove कैसे करें, क्योंकि अभी तो मैं किसी को तब उस टाइम पे when I had gone in the year 2008 2009 अगर मैं किसी को बोलता कि मैं cannabis यूज करके मेरा asthma ठीक हो गया, they would say, you are absolutely mad. You have lost your brains. It's an addictive substance and you are addicted to it and you are just wanting an excuse. But that's not the case. There was a lot of benefit that I got, my friends got, but we couldn't talk about it back then. So that's how the inspiration initially originated. But when I was actually, after I did my thing in Australia, I moved to Dubai. At that time, what happened is my aunt she suffered from, she got glioblastoma multiforme, which is a form of very dangerous type of aggressive type of brain cancer. And she was one of my closest aunts. क्योंकि स्कूल हम लोग क्या करते थे, स्कूल बंक करके हम लोग जाते थे उनके घर में. So she knew that we would be coming, so she would still lovingly cook food for us. That okay, because हम जानते थे घर जाएंगे तो गाली खाएंगे, but आंटी के पास नहीं जाएंगे तो नहीं खाएंगे, एटलीस्ट खाना खा के तो चले जाएंगे. But she was very loving, and when she got this, and जब मैं वापस आया and I was trying to have a conversation with my family, I saw that there was huge amount of opposition. वहां पे उनका हालत तो खराब होता गया. इधर मेरे को पता है कि इट कैन हेल्प क्योंकि मैंने इतना कुछ सुना हुआ है, देख पढ़ा भी हुआ है, बिकॉज इन द मीन टाइम आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस. And I saw there is a lot of evidence anecdotally, not from now, but from a long time coming from many international places. जहाँ की वो दिखाना चाहते थे कि it is harmful, but it turned out that it is actually benefic. The research study came out. So ये सब जानने के बावजूद भी जब मैं बात नहीं कर पाया and I was unable to say anything, that was the final nail in the coffin, guys. That's ओके. when I said, no, I have to do something here because she was so much in pain and I was so much having an opposition to deal with. कि doctors भी बोल रहे हैं कि like you can't even talk to doctors. Can you imagine like you asking your guy who was asking your parents to go and talk to the doctors to tell that their aunt can get cured if they have cannabis? How ridiculous it is. ऐसा था. So this what is actually was the final nail in the coffin, and I decided to hang my boots of the hospitality career and do something in India. you know क्योंकि हमें तो मालूम था कि उड़ीसा में तो कुछ कुछ होता रहता है, गवर्नमेंट का शॉप है, आयुर्वेद में भी यूज हुआ है, हम सुने हैं. So let me do something. So I came back to India and I started doing different kinds of studies. मेरे grasp में एक तो legally कि law में क्या कहती है, I did the study of NDPS law. I did all my own research. Okay, there is a clause in chapter 7A which allows for the medical and scientific
use. Section 8 read with Section 10 allows the state government to have its own set of laws. And I started, scratching my head. अच्छा, सब बना बनाया पड़ा है, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है, you know? I mean, everything is there. And the more I delved into it, I came to know that it has been a part of the Indian pharmacopoeia, of the Ayurvedic pharmacopoeia, of the homeopathic pharmacopoeia. The pharmacopoeia, आप जो जानते होंगे, the main book which is followed, like, हर जी like सर। any kind of pharmaceuticals में या किसमें, उनका नाम है. And the cannabis is found mentioned, but nothing as such was getting done. So finally, though, what I did is with my college friend, with one of my college friends, I started the first cannabis company in India with a focus to relaunch cannabis or to reintroduce cannabis as medicine through the Ayurveda. क्योंकि हमें पता था कि आयुर्वेद में बहुत सारे क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे आपकी हो गई अभ्रवाटिका, जतिफलादि चूर्ण, कामेश्वर मोदक, सर्पगंधा घनवाटी, ऐसे करके more than 180 formulations and for 200 and plus indications are there in Ayurveda. Now we said, ki, okay, let's introduce cannabis back to mainstream India as a medicine through Ayurveda. So that was the goal of, Vedi herbals. Like that was how we started doing, an entire thing with Hemcan Solutions. But my goal was also this, guys, कि आयुर्वेद में एक limitation भी है, क्या? Now I saw firsthand that there was a lack of evidence when it came to studies when it comes to Ayurveda drugs. Cannabis तो बहुत दूर की बात है, वो भूल जाइए. आयुर्वेदा ड्रग्स के ऊपर ही अगर हम फोकस करते हैं, तो उसके ऊपर क्लिनिकल वैलिडेशन रिपोर्ट स्टडीज बिल्कुल है नहीं. वो तो मोदी जी के अभी लाइक गाइडेंस के अंडर में, लाइक दे अभी आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट एंड बहुत ही अच्छा एक स्टैंडर्ड लाया है, जिसकी वजह से लाइक फॉर प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस इट इज मैंडेटरी to like do clinical studies, to give toxicity data, to give all those basic data जो चाहिए to prove that this formulation is safe. ये आपको करनी पड़ेगी. बट आगे बैक इन उस टाइम पे था नहीं. अभी धीरे धीरे करके laws have changed and things have happened, but still when it comes to like cannabis also there is a lack of data. और आपके घर में, मेरे घर में अगर कुछ होता है इमरजेंसी में, आप वैद्य जी के पास नहीं दौड़ोगे. मैं वैद्य जी की, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी विल गो रन टू द ईआर. ठीक है, I mean, there is no harm in accepting the fact that that is the reality of it. No matter how much we say Ayurveda में है, ये है, but because of the precision medicine, because of the trust, we will go there, right? Whereas कि आयुर्वेद में भी है. ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में और सर्जरी अलाउड नहीं है. सुश्रुत कर रहे थे. He was also doing surgery and all of those things. But when it comes to modern acceptance of the modern society of it, the reason there is a drawback or there is a pushback is because of scientific validation. तो वो scientific validation लाना बहुत ही जरूरी चीज है, especially for cannabis जो कि already बहुत ही misunderstood. तो इसी सोच विचारधारा से हमने शुरू किया डेल्टा बोटानिकल्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, with the goal, with the sole goal being this कि people first approach. We knew कि हम legacy pharma companies नहीं है, ना ही हम family backed offices से है. We started off as a startup and we have slowly evolved into a company with the vision which is so clear and precise कि boss, in order for cannabis to see the perfect light of the day, it needs to be prescribed by a normal doctor physician and an Ayurvedic physician as well. There has to be an acceptance in both modern medicine and traditional medicine. Otherwise, cannabis will never ever be having that wider acceptance that we as companies are aiming for it. So keeping that in mind, आज तक let me tell you, Naveen and team, we have never launched any product. You know, our thought process is people first. जब तक वो proof नहीं होता कि what we are claiming is actually validated by data, you know, we don't want to launch anything. We don't want to do that. Period. Cannabis is misunderstood, and since we are people who are one of the representatives of the industry,
we have to be very responsible, on how we do things. So yeah, that's a bit about what we are doing on the ground. और भी चीजें हम कर रहे हैं, that is on the count, that is on educational awareness. And also in the state of Uttarakhand, we are one of the only, companies who has been given the license to cultivate with Uttarakhand Technical University in Dehradun. हम IIT रुड़की में incubated हैं, and हम इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो छत्तीसगढ़ में है, उनके साथ हम ये सीड ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे कि लाइक हम इंडिया का फर्स्ट लो नार्कोटिक इंडस्ट्रियल हेम्प क्रॉप, जो कि होती है जो इसकी एक वैरायटी है कैनबिस की, जो हम यूज करते हैं बीज और फाइबर के लिए, और है वो सेम प्लांट, बस उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल हेम्प, क्योंकि वो प्रजाति को इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होती है. That is like for seed and for fiber. So yeah, that's a bit about us. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस शेयरिंग योर जर्नी इन सो मच डिटेल. लेकिन मुझे इसमें ये भी जानना है कि अभी जैसे आपने डेल्टा बोटानिकल्स के बारे में बताया कि अभी मुझे ये जानना है कि इंडिया के बाहर किन किन कंट्रीज में कैनबिस का डाटा, अभी किन किन कंट्रीज में कैनबिस लाइसेंस के साथ सेल होती है, और किन किन कंट्रीज में इसके एज अ मेडिसिनल पर्पसेस साइंटिफिक वैलिडेशन या साइंटिफिक डेटा अभी है मार्केट में, और इंडिया में अभी से कितना टाइम लग सकता है. जैसे आपने बताया कि अभी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हो, राइट? आप जैसे आपके साथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फूक फूक का कदम रखने पड़ते हैं. तो इंडिया में अभी हम कितना पीछे हैं, और अगर हम बाहर की कंट्रीज से बात करें तो बाहर की कंट्रीज में कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुकी है कैनबिस के मामले में एज अ मेडिसिन? Very good question, Naveen. देखिए, भारत हमारे भारत में भांग या ये कैनबिस को ऑलरेडी ये मान्यता दी गई है. आपके वेदों में भी, अथर्ववेद में भी है, लिखा हुआ है कि ये वो पांच पौधों में से एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट पौधा, विजया का पौधा भी माना जाता है. हमने इंडिया से ही, इंडिया में इवन जो हेम्पक्रीट हम बोलते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल बनती है हेम्प की, वो इंडिया में, आपको अगर मैं बोलूं कि अजंता एंड एलोरा केव तो आप सुना ही होंगे, तो एलोरा केव्स में इसको हेम्पक्रीट को यूज किया गया था. इवन बिफोर यूरोप में हेम्पक्रीट को, आज के डेट में बोलते हैं यूरोप में फर्स्ट हुआ हेम्पक्रीट, बट एक्चुअली हमारे देश में ऑलरेडी ये आगे से प्रचलित थी. हम्म. लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम, बिकॉज ऑफ द, हमारी जो 1916 में वॉर ऑन ड्रग्स यूएस निक्सन गवर्नमेंट ने शुरू किया, उसके वजह से क्या हुआ ना, इंडिया के ऊपर बहुत दबाव थी कि उनको कुछ भी करके, और इंडिया तब नई नई फ्री भी हुई थी. वी वर नॉट दैट डायनामिक, लाइक वी टुडे आर. वी आर मच डायनामिक पीपल. आज के डेट में जब हम बाहर जाते हैं, हम बोलते हैं, सीना तान के लोग बोलते हैं हम इंडियन है. जब मैं गया था बाहर, तब हम सब, हम इंडियन, हम कम फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ काइंड ऑफ ये थिंग. आज के डेट में द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया एंड द ग्लोबल fear is very high, but there are certain places where we still need improvement. Cannabis and crypto is the same case in India. It's the very same. In cannabis, though, the only thing is this कि ये आगे हमारे इंडिया में इनफैक्ट सबसे डिटेल स्टडी ब्रिटिशर्स के टाइम पे द ब्रिटिश इंडियन एम कमीशन रिपोर्ट हुई थी. The Britishers had done a really deep study on cannabis based intoxicants and भांग के ऊपर वो किए थे, you know, way back in the 1800s, way back in the 1800s. So for medicine, it was already being used here, but then because of the law thing that happened, the laws जो आए, इसको पूरे दबाव में, यूएस के दबाव में आके हमें सब कुछ रोकना पड़ा. तो ये एक जो ज्ञान थी, आप एक जानते होगे, ज्ञान लुप्त हो जाती है. जैसे आपके अगर हम थोड़े बहुत इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे. जैसे हम बोलते थे, तानसेन जब गाते थे अकबर के दरबार में, जब वो राग दीपक गाते थे, तो दीपक जल उठते थे विदाउट इवन द नीड फॉर लाइटिंग देम. और मेघ मल्हार जब गाते थे तो बारिश आ जाती थी, तो बारिश आ जाती थी. तो ये जो विद्या थी धीरे धीरे लुप्त हो गई. क्यों ना? आफ्टर द, आफ्टर अकबर,
the next subsequent rulers did not give patronage to such things and they destroyed it. So there was a very dark phase. So of music era at that time, the time of Aurangzeb. The same thing happened in India. There's a dark phase where everything was like completely shut down. There was no idea. जो भी पता था लोगों को regarding medicines, they all had to practice in hidden thing. But in the West, what happened is because of this doctor from British East India Company whose name was W.B. Shaw Honnessy, he introduced the concept of cannabis as a medicine to the West. Okay, and अगर आप believe नहीं करोगे, Eli Lilly, which is a pharma company, one of the oldest pharma companies, they were the first to get the seeds of cannabis from India to USA and breed a superior variety that they could claim to be of higher price because at that time US में जो US का hemp tincture मिलता था, that was like what 20 cents a gallon, whereas the Indian hemp extract used to sell at $20 a gallon. Can you imagine the difference? Because it was that potent. एंड धीरे धीरे करके ये डब्ल्यू बी शॉ हॉनेसी जो थे, ये डॉक्टर इंडिया में थे, कैलकाटा मेंटल हॉस्पिटल में ये इसके मेडिकल डायरेक्टर थे. सो व्हेन ही वेंट बैक ही इंट्रोड्यूस्ड द वेस्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन. एंड धीरे धीरे करके इन द वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज दे हैड लॉज pertaining to cannabis. And ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, अगर आप यूरोप में देखोगे, there are many countries which had got some kind of laws in place for research. But very recently, last 10 साल में इसके अब एक एक्सेप्टेंस एक बहुत ही बड़े स्वरूप में हुई है. क्यों ना यूएस ने लीगलाइज किया. यूएस में आज के डेट में देर आर मोर देन 33 स्टेट्स दैट हैज लीगलाइज्ड फॉर रिक्रिएशनल यूज आल्सो. फॉरगेट मेडिसिनल यूज के लिए तो मोर देन 35 they have done it, but 32 have already done it for recreational use. कनाडा ने फेडरली इसको लीगलाइज कर दिया है, मतलब शेड्यूल 1 में वो है ही नहीं. एंड कोविड के टाइम पे इट वाज सोल्ड एज एन एसेंशियल थिंग लाइक अल्कोहल. तो इनका ये बहुत आगे से मेडिकल यूज के लिए था. रिक्रिएशनल लेट में खुला, बट दे डिड ओपन अप. यूएस आल्सो स्लोली, इनिशियली दे ओपनड अप फॉर मेडिसिन, देन रिक्रिएशनली के लिए खोल दिए. यूरोप में आज में लेटेस्ट एडिशन में जर्मनी है, हमारे नेबर में थाईलैंड है, और हम भी कंसल्ट किए हैं अभी नेपाल की कुछ कंपनीज के साथ जो कि नेपाल में अभी लीगलाइज होने वाली थी, तो उसके लेके भी बातचीत चली है. लाओस में भी है. फिर काफी सारे अभी साउथ ईस्ट एशिया को धीरे धीरे करके खोल रही है. बट यूरोप एंड अमेरिकाज में देर आर a lot of countries which have accepted it as that it has got medical use and medical dispensation भी करते हैं. इसराइल जो कि अभी न्यूज में इतना है, let me tell you guys, Israel is a pioneer in medical cannabis research. They actually give joints and basically inhaled cannabis extracts for different conditions in Israel. So it is like very much integrated into the health system, into the medical system. Everyone who is given the cannabis for these pain like shingles या फिर war के बाद जो amputees होते हैं, उनके जो सब जो न्यूरो इन्फ्लेमेटरी पेन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, they have this integrated into the national health system. So countries outside India like this have like really really gone ahead. In India though, like मैंने आपको कहा, chapter 7A of the NDPS Act, which is called as the Medical and Scientific Use Clause, उसमें very clearly लिखा हुआ है कि देखिए cannabis for medicine and for research के लिए use हो सकती है. It's just that कि there is a not the only drawback is medical use क्या है, scientific use क्या है, उसका well defined explanation NDPS में नहीं है. एनडीपीएस ने क्या किया हुआ है, वो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10 के आधार पे स्टेट को पावर दिया है, और उसी आधार पे आज के डेट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, इन ये सब स्टेट में अभी इन चारों स्टेट में से एक स्टेट एक ही है जिसमें कमर्शियल कल्टीवेशन है, वो है उत्तराखंड. बाकी सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है. तो ये सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10 के आधार पे ही इन्होंने आगे जाके अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं. आगे जाके आपके जो अंत की जो क्वेश्चन थी, आपने जो पूछा कि इंडिया में इसका और
लेजिस्लेशन वाइज क्लैरिटी कैसे आएगी और कितने देर में आएगी? लवीन, अभी क्या है ना, जैसे हर एक इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, और मैंने जैसे कि आपको कहा, क्रिप्टो में भी नए नए लॉज आ रहे हैं, और कैनबिस में भी नए लॉ, अभी अभी नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। सो अभी बेसिकली एक नया रूलिंग आया हुआ है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइक ने अपना सारा एक कमिटी बना के स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड ड्रग्स का जो फॉर्मुलेशंस है उसके लिए एक कमिटी बना रही है, सो दैट देर इज मोर efficiency and there is more transparency and also there is standards, कि mainly the unified standards में जैसे काम हो। तो you know I hope that the government approach उनका चेंज थोड़ा सा हो। मैंने तो काफी सारी जगह में पब्लिक पोडियम में बोला भी हुआ है, नेशनल टीवी में भी बोला हुआ है, जहाँ पे मेरे ऑपोजिट में फॉर्मर नार्कोटिक जनरल ऑफ इंडिया बैठे थे, एंड आई हैव सेड दैट इंडिया शुड अडॉप्ट अ मोर clearer stance and less confusing stance to cannabis. And even in that live TV, he had said, yes, we should do it because, this should be treated just like alcohol, or like, or like a medicine, like any controlled medicine, जैसे ओपियम की भी खेती होती है, आप अगर देखोगे, एंड ओपियम की खेती होती है, ओपियम जो पॉपी बोलते हैं, ओपियम पॉपी उसकी खेत होती है, एंड द गवर्नमेंट buys it back, then the government gives it, processes in the government alkaloid factory, and different pharma companies को वो जाती है for further processing into morphine, which is like used as a painkiller. तो जैसे इसका कंट्रोल है, इसका भी वो कंट्रोल हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर मेरे को यहाँ पर ये समझना है कि ठीक है, आपने ये सब बताया कि बाहर की कंट्रीज में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से लेकर मेडिसन एज अ मेडिसिनल पर्पसेस भी वो बहुत टाइम से यूज होता हुआ है। और इंडिया में इंडस्ट्रियल अभी, भी। हाँ जी, इंडिया में वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो मतलब आपकी कंपनी ऐसा क्या कर रही है, लाइक मतलब अगर मैं आपका डाउन द लेन नेक्स्ट 5 इयर्स का आपका विजन समझूं, ठीक है, तो आपकी, क्योंकि मुझे ना इसमें ये भी चीज समझनी है कि क्या अभी इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, तो जो अगर आप इसका कल्टीवेशन कराएंगे कल को, अगर आप इसकी कल्टीवेशन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो ये कैसे इंडिया लेवल पर ये कैसे कैसे होगा? गवर्नमेंट का इसमें क्या क्या एनरोलमेंट रहने वाला है? और इसकी पढ़ाई क्या आयुर्वेदा से आएगी? मतलब जो स्टूडेंट्स आप लेंगे R&D के लिए, ठीक है, अभी तो शायद आपकी जो भी टीम है, लेकिन अगर इसे आपको स्केल करना है, ठीक है, एज अ मेडिसिनल उसमें, तो आपको जरूर इस पर R&D पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो उसके लिए आपको किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स चाहिए होंगे? लाइक जो आयुर्वेदा से अपनी पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप खुलेगा, या फिर वो, मेरे को थोड़ा सा ना और मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि इसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है। वेरी गुड क्वेश्चन लवीन। सो देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं, राइट? आपने कहा कि इंडिया में कैसे होएगी इसकी अगर कल्टीवेशन हम करें, सो हाउ शुड इट बी? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक both on the level of governance and also on the level of business, दोनों साइड में, ठीक है। एंड थर्ड रहा हमारा कंट्रोल, which is already there, okay, but there has to be this is a trifecta, if you can see. So इसके लिए अगेन इंडिया हैज टू क्रिएट लॉज, जैसे कि अभी उन्होंने भारतीय न्याय संहिता बनाई है, विच इज मोर फोकस्ड ऑन इंडिया, नॉट ऑन व्हाट some government used to who rule us, and उसी के आधार पे there is some law code. We have created laws specifically suited to our country and our society. तो ठीक वैसे इंडिया में भी when it comes to formulating laws, we have to have a very nuanced approach, wherein जो बाहर के कंट्री में है, आई मीन द लॉज आर देयर। फॉर एग्जांपल, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आज के डेट में बन चुका है वो है टीएचसी लिमिट। टीएचसी क्या है ना? टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल क्या है ना? इट इज द कंपाउंड विच कॉजेज द नार्कोटिक इफेक्ट इन द कैनबिस प्लांट, दैट इज व्हाट गिव्स द साइकोएक्टिविटी। नशा उससे होती है, दैट इज द कंपाउंड विच कॉजेज द नशा। नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ये बोला कि देखिए, वो पौधा, वो भांग का पौधा, वो कैनबिस का प्लांट जिसमें लेस देन 0.3% टीएचसी है, वो इंडस्ट्रियल हेम्प है। अब ये जो चीज है,
ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में बना, ठीक है। अब यूरोप में जो पौधे हैं वो अलग है। क्यों? क्योंकि यूरोप का क्लाइमेट अलग सही बात। है ना। तो जैसा जो हम बोलते हैं, हमारी इंडिया में कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। ट्रू। वैसे पौधों के लिए भी वही है, जानवरों के लिए भी वही है ना। सही इंडिया में बात। जो जानवर मिलते हैं वो जानवर अलग जगह में नहीं मिल सकते, या मिल सकते हैं अगर कोई वैसे कंडीशंस हो। बट देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच आर एंडेमिक टू इंडिया, सर्टेन प्लांट एंडेमिक टू इंडिया, सर्टेन जीन्स व्हिच आर एंडेमिक टू इंडिया। ठीक वैसे हमारे जो यहाँ के पौधे हैं, इनका खुद का एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। तो अब इन्होंने, यूरोपियंस ने ना क्या किया, उन्होंने कोई रिसर्च स्टडी भी नहीं किया था कि 0.3% टीएचसी लिमिट एक्चुअली में टॉक्सिसिटी कराती है। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है, आज तक कोई भी गवर्नमेंट के पास ये डेटा नहीं है कि एक इंसान के बॉडी में कितना लेवल टीएचसी जाने से उसे नशा चढ़ता है। कैन यू बिलीव दैट? We have स्ट्रेंज। so much of laws regarding control of cannabis. We have to stop its trafficking, we have to stop its smuggling, and it is this and that. But there is not enough data, even though studies be ho, there is not enough data to say how much THC is going to cause a toxicity or narcotic effect in a human, क्योंकि उतना स्टडीज हुआ ही नहीं है। ओके, नाउ इंडिया में क्या हुआ, जब हम लॉज बनाते हैं, we generally take into consideration the laws which are there in the international standards, and we are not very proactive in, breaking the line. Okay, when it comes to breaking the line, we are not that very proactive. तो इसीलिए हम, मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है, अगेन माय ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लिमिटेड, बट द थिंग इज, when it comes to policymakers to make a policy, we have to have, we have to consider कि जो बाहर की पॉलिसी बनी है भांग के ऊपर, या इंडस्ट्रियल भांग हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं, मेडिसिनल कैनबिस हो गया, एनी ऑफ इट, औषधीय हो या औद्योगिक हो, मेडिसिनल हो या इंडस्ट्रियल हो, जो लॉज बने हैं, हमें इंडिया सेंट्रिक लॉज बनने चाहिए। एंड ये जो लिमिट है, जो टीएचसी लिमिट जो सेट करना होता है, उसको हम उस आधार पे करें, जिस आधार पे कि हमारे यहाँ वातावरण के जो पेड़ हैं उसके ऊपर स्टडी करने के बाद तब भी जाके हम कोई चीज करें कि हाँ, इतना इतना परसेंटेज रहना ठीक रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए अब क्या हुआ, जब उत्तराखंड सरकार ने लीगलाइज किया कैनबिस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो बहुत कंपनियां बीज बाहर से भी लेके आए, ग्रीनलैंड से, यूरोप से, जो स्टैंडर्डाइज्ड वैरायटीज है, बट वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रजाति हमारी इंडियन कंडीशन के लिए बनी ही नहीं है। तो हमारे कंडीशन के लिए जो बीज जो है, जो प्रजाति अगर हमें बनाना है जिसमें कम नशा हो, देर आर प्लांट्स, देर आर डेफिनेटली, हम, अवर इंडिया हैज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ जेनेटिक्स, सो वी कैन डेवलप इट, बट इट नीड्स, लाइक यू सेड, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू लविन, आज तक हमने 14 साल, लाइक फ्रॉम 14 years, when company got co-founded from 2018, from 2018 till now, so much we have invested and completely bootstrapped all on research. And that's the validity that we are bringing on the table. That we have data speaking to, when we speak, we also have data. So इंडिया में लॉस के आधार पे, जबकि मेडिसिन का आधार हो, लाइक आई सेड, यू नो government just needs to, we don't need to have a lot of change in the NDPS Act. बस व्हाट इज मेडिसिनल यूज, व्हाट इज साइंटिफिक यूज, उसको अगर गवर्नमेंट डिफाइन कर दे एंड एक सेंट्रल मैंडेट डाल दे दैट स्टेट्स नीड्स टू फॉलो, वी आर एटलीस्ट एट अ पॉइंट वेयर वी कैन वर्क विद गुड medicines. We can start doing research and development on medicines even more. आज के डेट में we are one of the only companies which is heavily invested doing clinical studies, not launched a product till now, but not all companies can afford to do that. you know so once the government comes in with some more supportive policies in place, it will be a very very different story, and the government is doing it. The हम्म cannabis works through our central nervous system. And हम्म since आप ये बात भी कर रहे हो, let me tell this to you, मैं बहुत जगह आजकल I am focusing on letting people know that हम्म guys,
the compounds which is present in the cannabis plant is also being manufactured in our body, within our body. Oh. Yeah, कौन you सा सर? should know this. What is it? Cannabinoids, it is called as there are two known cannabinoids as of now. One is Hmm. called anandamide. Ananda, Hmm. means bliss. Hmm. Amide Hmm. is a family, is a amide family ka. And the Hmm. second one is 2-arachidonoglycerol. Hmm. And it is found in the breast milk of the lactating mother. So Hmm. ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं endogenous cannabinoids. So what are Hmm. cannabinoids? Hmm. Cannabinoids are the compounds which are predominantly found in the cannabis plant, Hmm. and they are like they could be present in other plants also, but Hmm. these are the compounds which are found in the maximum concentration in the cannabis plant. Now Hmm. our body has got a system. आपको Hmm. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया गया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया होगा, हाँ, Hmm. रिप्रोडक्टिव Hmm. सिस्टम पढ़ाया गया होगा, बट द एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम विच इज द मेन सिस्टम ऑफ ऑल ऑफ दिस सिस्टम्स, इसके बारे Hmm. में पढ़ाया ही नहीं गया है. Yeah. Now, Yeah. the reason being this, कि this was found out by Dr. Raphael Mechoulam, an Israeli scientist, Hmm. in the early 90s when he was doing a research. And Hmm. funny thing, when he went deeper into it, he found out Hmm. that this Hmm. endocannabinoid system is so vital that Hmm. every kind of disease that is happening to a human body is somehow linked to the disbalance in the endocannabinoid system. Now, can you Hmm. imagine how important the system is? And we are not Hmm. taught about it. And Hmm. this system produces the same substances Hmm. but within our body. One of that Hmm. is anandamide, which is like secreted from the pineal Hmm. gland. Pineal gland, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा कि it is a vestigial organ, but it is not. Wake Hmm. up to the reality, it is not a vestigial organ. Hmm. It's an organ with full function, and it Hmm. secretes this molecule, which Hmm. basically gives you ananda. Ananda माने क्या? Bliss. Not खुशी, bliss. Bliss is अलग. Bliss is eternal. खुशी के बाद दुख आता है, but bliss eternal. So what happens is जब आप दौड़ते हो, when you are running, there is this thing called as runner's high. Like आप दोनों दौड़ रहे होगे और अचानक एक दूसरे को जब देखोगे ब्रेक लेके, you will Hmm. start laughing. Why is Yeah. that? That is because your body just got gifted Anandamide by your as a reward mechanism to the hard work you did along with the endorphins. Hmm. Anandamide came out to relax your body, and that is why you did that laugh, that small giggle. So that is Anandamide. 2-arachidonoglycerol, ये जो इतना पोटेंट एक एंडोजेनस कैनाबिनॉइड कंपाउंड है कि उसके बिना एक बच्चे का वाइटल शुरू भी नहीं होगा. लाइक द फर्स्ट secretion of the breast milk जो निकलती है, it is so much richly packed with 2-arachidonoglycerol and these cannabinoids. वो जब जाता है शिशु के मुंह में तब भी जाके शिशु के बाकी सारे चीज शुरू होते हैं. So this is a research that is completely like never been talked about in India, and globally also ये धीरे धीरे करके अभी हो रहा है. Like the reason doctors in India do not know about this क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया है. जब मेडिकल करिकुलम में है नहीं, हाउ कैन यू ब्लेम द डॉक्टर कि बॉस डॉक्टर गधा है, डॉक्टर नहीं बोल रहा है, मैं पंडित हूँ, मैं कैनबिस के बारे में बोल रहा हूँ, आयुर्वेदा से मैं सीखा हूँ. नो, इवन इन आयुर्वेदा we are not taught about the endocannabinoid system. So uh, as a company again, we are doing this, that how we can remove this doubt and misconceptions is when we are in different places, or also like when we are presenting, we educate people. Look, this is the human endocannabinoid system. आपके बॉडी में भी ये Yes. प्रोड्यूस होता है. So yeah. बट सर, आप अपने कस्टमर्स को क्या बताते हैं जब आप उनके पास जाते हैं? क्योंकि आपको पता है, जैसे इंडिया में बहुत मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है कैनबिस को लेके, तो आप अपने कस्टमर्स को क्या बोलते हैं कि हाउ इट विल बेनिफिट देम? Okay. So along with being like designing our own product, हम consulting and advisory services भी देते हैं नए नए companies को, नए individuals को जो कि इस space में enter करना चाहते हैं. And at the same time, we have been able to collate a lot of data on the ground regarding people's acceptance to cannabis. And the funny thing is what?
people are accepting it as a medicine when it is when it is more like a capsule format mein hai. The thought of it being a medicine comes with that. Secondly, आपने जो चीज कही कि हम पेशेंट्स को हम जैसे या फिर हमारे कस्टमर्स को क्या बोलते हैं, सो लाइक आई सेड, we need an exercise to find out that how much are you going to accept the medicine. How are you going to accept the medicine if it is prescribed by an Ayurvedic doctor, or is it prescribed by a normal physician, or is it prescribed by both an Ayurveda physician and a modern medicine physician? Answer was both. अगर दोनों ही बोले कि ये अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, आप जाते हो डॉक्टर को बोलते हो, आपके मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को, सर मैं ये भी खा रहा हूँ, मेरे को वैद्य ने दिया, डॉक्टर बोलता है बेकार बात है, ये सब फालतू चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वैद्य जी के पास जाओ, वो नाड़ी चिकित्सा करके आपको बोलेंगे कि तुमने ये खा लिया है बोल के तुम्हारा शरीर गर्म है, तुम वो एंटीबायोटिक्स छोड़ दो। अब करे तो करे क्या, इंसान कितनी बात सुने। सो इफ बोथ ऑफ देम कम टू दैट सेम पॉइंट एंड दे से बॉस ये काम करता है, समझो कि काम तुम्हारा हुआ। सो लाइक आई सेड, हमने प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, वी डिड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैवी मार्केट सर्वे, एंड ओनली आफ्टर डूइंग दैट वी नो कि हमें कहाँ काम करना है। दूसरी बात हमने ये देखा कि लोग जो हैं वो आज के डेट में कोई भी कोई भी मेडिकल सॉरी कोई भी ओरल मेडिसिन खाने से ज्यादा दे वुड बी हैप्पी टू पुट समथिंग एंड टॉपिकली, स्किन के ऊपर लगा दिया, कोई मलम वलम है या कुछ है, तो इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, सो दैट उसकी एक्सेप्टेंस, जैसे माइंडसेट की तो चेंज होने के लिए समय लगेगी, और हम तो नेस्ले नहीं है कि भाई हम उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं, बट ग्रेजुअली एंड नेचुरली इट विल हैपन, एंड वी हैव टू वर्क आवर वे अराउंड इट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड। टॉपिकली इसका एक्सेप्टेंस ज्यादा है, एंड जिस दिन बोथ एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एक साथ बोल देंगे कि हाँ जी ये आप लगाइए ये काम होगा, समझ लो आपका एक्सेप्टेंस वहां पे हो गई। अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है। इंडिया में इस इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, हर एक सेगमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत डिफरेंट है। अब मेडिसिन मार्केट्स का इट्स लाइक इट हैज बीन अ जो मार्केट, क्योंकि अगर आप मुझे पूछे जो कि पहली कंपनी थी हमारी, ओके, एंड आज के डेट में कोई आज कंपनी कोई खोला है और वो अगर देख रहा है, उसका दोनों के दृष्टिकोण बहुत अलग होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना जी। कि हमारे लिए हमने तब वो समय देखा जब कुछ भी नहीं था, और आज और हम यहाँ तक आप पहुंचे कि जहाँ पे हम आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं भगवान के दया से, और हम इतने बड़े विषय में बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल में भी हम बात कर रहे हैं, हम एकेडमिक यूनिवर्सिटीज के साथ बात कर रहे हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू द एफर्ट पुट्स इज वेरी हाई, and at the same time when it comes to monetary wise, it is subsequently very very good if it is done in the right way। अगर आपको immediately कोई चीज की रिटर्न जैसे हमें मालूम होता है, we do know, like you said, attention span and the wait time सबको आजकल थोड़ा सा कम चाहिए, बट अगर कोई इंसान या फिर कोई बिजनेस इसके अंदर घुसना चाहे, एंड कीपिंग अ लॉन्ग टर्म रिटर्न इन फोकस with then definitely there's a huge returns. But if you're looking for fast gains, then this industry is still yet to evolve. Export market may, like, there is a lot of demand, but although like the basic basic चीज में देखा जाए, there are certain gaps that still need a lot of work, especially जब supply chain हो गया, either be it hemp or be it like medical cannabis, there are still more places that need work on. But yeah, I mean, like on different segments, the return on investment is very, very different. I would say what I have observed in my time would be staggering, like I said, क्योंकि हम जब शुरू किए थे कुछ नहीं था। ओके। सो सर यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जब ये अगर फ्यूचर में लीगलाइज हो गया एज अ मेडिसिन कैनबिस,
तो डोंट यू थिंक, मतलब हो सकता है ये आपका फोर्टे ना हो क्योंकि यू आर नॉट इनटू द लीगल साइड, बट आई एम जस्ट ये थोड़ा मेरी स्पेकुलेशन है कि जैसे अभी भी इसका इलीगल यूज होता है, लेकिन जब ये मेडिसिन की तरह अप्रूव हो जाएगा तो तब इसका इलीगल यूज नहीं हो पाएगा, तो इसके मिसयूज नहीं बढ़ जाएंगे फिर? डोंट यू थिंक सो? और फिर गवर्नमेंट के लिए तो क्या पता गवर्नमेंट इसलिए थोड़ा रिडंडेंट हो अभी इंडिया में, तो इस पर कैसे कोई पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट जिसे मॉनिटर कर सके सब चीज को? That's a very good question. Again, I would like to answer this from the perspective of science again. Like, without science, you know, talking something would not really be substantiated. So, uh, एक दवा है, उसका नाम कोरेक्स कॉफ सिरप है। ये किसी हाँ, भी दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। ट्रू। इसका एक्टिव कंपोनेंट कोडीन है, which is a morphine derivative. At the same time, dude, there are this is a visible problem. ठीक है? Then there is an invisible problem that happens in homes. For example, there are this, senior cases who have been prescribed with morphine, and they have become so much dependent on morphine that अगर भी उनका condition manageable हो, उनको अगर वो dose morphine का ना मिला, तो घर में भाई पूरे एकदम चहक मच जाती है. And because they belong from a very well-to-do family, and it is like the grandparents age के लोग, they are seeing drug addiction happen in them because of prescribed pharmaceuticals. It is a hidden problem, right? They cannot talk about it. They cannot express their concerns. किससे बोलेंगे ये क्या हो रहा है बोल के, कि अब मेरे मम्मी पापा को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था मॉर्फिन, एंड वो लोग आज के डेट में बिना उसके मतलब सांस लेने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे मेरे को मेरा दवा दे, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. But he's healthy and hearty, but he still needs that medicine because unke bina he doesn't get the feeling good. So abuse, let me tell you, अल्कोहल भी देखिए, अब अल्कोहल लीगल है, ठीक है, बट क्या हर आपके ऑफिस में हर एक दिन कोई पी के आ जाता? So it is a psychological issue, and we have to understand, along again with science, cannabis is one of the most safest intoxicant. मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है, आज की डेटा नहीं, वो भी ब्रिटिशर्स की डेटा, फ्रॉम द longest number of human subjects, highest number of human subjects. They had interviewed more than 1200 subjects in 1800s, यार, जिस ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका दिमाग घूम गया, बोले हम लोग लिकर पीते हैं, हमको हैंगओवर होता है, ये लोग क्या पीते हैं भाई, कुछ झूमते रहते हैं रात को, सुबह आके पूरा फ्रेश, भाई क्या है क्या ये. सो वी विल डू ऑन स्टडी. सो इट वाज द ब्रिटिश इंडियन हेम्प कमीशन रिपोर्ट, आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं. Whatever I'm saying, it is like you can validate it. It is there. This information is available in public domain. So they found out that cannabis is one of the safest one. नाउ व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, ये मैंने आपको डेटा बोला ना. साइंस क्या है ना, ओपिएट हमारा एक, जो जैसे मैंने कहा, ब्रेन स्टेम एक चीज होती है जो कि हमारा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है. नाउ ब्रेन स्टेम में बहुत सारे ओपिएट रिसेप्टर्स हैं, बट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स बहुत कम है. कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स क्या है ना, जैसे मैंने आपको कुछ देर आगे कहा था, हमारे बॉडी में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, एंड दिस सिस्टम कंप्राइज ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स. ओके, सो रिसेप्टर्स क्या है, दोज आर दोज ग्लैंड्स जिसमें जाके ये जो कंपाउंड से अटैच होती है, एंड वी whatever we are experiencing after taking cannabis, it is because these compounds are getting bonding with these receptors and then you feel it. So जब अब मॉर्फिन का जो रिसेप्टर्स है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में ब्रेन स्टेम एरिया में है, एंड ब्रेन स्टेम एरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. Why? Because in this area, whatever happen, it controls all your vitals like breathing, like your heartbeat and everything. So आप बहुत चीज सुने होंगे कि लोग ओवरडोज करके मर गया. अरे कैसे मर गया ना, नींद में मर गया. क्यों मर गया? हार्ट बंद हो गई. So the abuse potential of opiates, heroin, and all of this is very high. But when it comes to cannabis, when it's taken in its natural form, it can never be harmful. But किसी का अगर प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो साइकोसिस निकलेगा ही भाई. सो इसीलिए द आज के डेट में अगर आप चीज देखोगे, नाउ दैट there is a lot of availability of these kind of narcotics in the market. Although control raha hai, the narcotic issue has gone up.
if we have more clearer laws, we will be able to protect people more. Harm reduction ज़्यादा हो सकता है. So this is what I feel. अच्छा सर, कैनबिस इंडस्ट्री का इंडिया में अभी क्या फ्यूचर है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको हॉस्पिटल से कैनबिस मिलेगा? Very good question. That would be a dream. कि like actually देखा जाए तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक्चुअली इवेलुएट कर रहे हैं ऑन द पोटेंशियल ऑफ यूजिंग कैनबिस फॉर प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, पेरी ऑपरेटिव पेन, ये सब के लिए यूज कर रहे हैं. और इंडिया में देखिए, इंडिया में तो it's not my place to say, but like I said, India में नोटबंदी भी हुई है, and our country is so dynamic that anything could happen. Okay, या so today the government actually is looking at different things. There are different state governments are opening up gradually, even, but it will happen eventually, but gradually. It is going to happen. There is no denying that, because देखिए, फूड शॉर्टेज भी हो रही है. सो फूड शॉर्टेज के लिए अगर आप देखोगे, FSSAI has legalized भांग के बीज as a food for human consumption. You will see hemp seed oil, hemp hearts, different cookies, और ये वो सब चीज अवेलेबल है ही. फूड्स में आया है. धीरे धीरे करके मेडिसिन में भी अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. इट विल हैपन gradually, but eventually. Got it, sir. Got it. So, sir, that was it from our side. सर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था और काफ़ी सारे आज मेरे और सचिन के भी बहुत सारे मिथ्स वगैरह दूर हुए. मतलब ये ऐसा टॉपिक था, या तो इसके साथ बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड थे. या तो लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते थे, या बात करते थे तो वो एक तरह से ना वो साइकोलॉजिकली ब्रेन में मूवीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू वो इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएटेड थी इसके साथ. तो आज आपने टेक्निकली बताया, थोड़ा से लॉ से साथ एसोसिएट किया, इसकी हिस्ट्री बताई, इसके मेडिसिनल यूजेस बताए, आपकी कंपनी कैसे क्या आपकी कंपनी का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और कैसे ये आइडिया आपने क्लिक किया. और ऑल्दो आप इस इंडस्ट्री के हो भी नहीं, उसके बाद भी आपने इस इंडस्ट्री में अपना दिलो जान से पूरा टाइम लगाया. सो यू आर रियली डूइंग अमेजिंग जॉब सर. एंड team BTR wish you luck, and and all the very best for your future endeavors for Delta, your own company. And it was a nice interactive session, sir. या थैंक यू सर. Thank you so much, Laveen. Thank you so much, guys. It was actually a very fun and interactive session. And again, I'm very much humbled. And by the grace of God, there has been a lot of progressive things that I have been able to see in this lifetime. So I hope you guys also have the very best. You guys are doing a very great job, and it's very Thank you. innovative. Thank you for having me here. Yeah, likewise, थैंक sir. यू Thank सर. you so या much. Bye bye. Bye Thank bye. you.